Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are doing well. You are taking care of yourselves as well as your family. As you are watching our channel, do subscribe it and click on the bell icon so that you get all of the notifications when what's happening on our channel. So let's start our future tense. We are done with our present as well as our past tense in terms of active and passive voice, whereas we are left with future tense. So let's start it. Future indefinite tense. First, the structure of positive sentence is given to you. Subject plus will shall plus first form of verb plus object. As you all know that we have studied present tense as well as future tense, and those tense are recognized by the form of verbs that are being used in them as well as the helping verb that we prefer to use. So same is the case with future tense. Here first form of verb is used and the helping verbs are will and shall. That you can see on the screen, that is subject plus will shall plus first form of verb plus object. Now object will be replaced with subject, as you all know, and this first form of verb will be converted into third form of verb. Now to support it, we add be after the helping verb, that is will be and shall be. By will be obviously placed here, as in all active and passive voices you noticed here that by is always there. So here the sentence that is given to us is I shall read a book. Now I is subject, shall helping verb, read is the first form for read, and object is a book. So now a book is object, we will replace a book with subject, that is a book will, and then with the addition of be as we have studied, will be read by me. Now there is another example. Boys will play football. Now football is object, it will come at the start. Football will be played by boys. We shall read a book. A book will be read की third form of verb है read, by we will be changed into us. Next comes negative sentences. As we all aware of it that not is always added after the helping verb, as we have practiced in present and past tenses. So here nothing is difficult here. We are having the same structure as for future indefinite positive sentences, whereas there is only the addition of not, and here also only the addition of not. Be is there as it is, third form of verb is there as it is, by is there as it is, subject and object are replaced as it is. So now if we just mention here an example, he will not smell flowers. Now flowers will not be smelled, third form of verb, by him. I shall not read a book. A book will not be read by me. So simple, just by keeping that structure in your mind as well as practicing it again and again, keeping that form of verb as well as with the helping verb, you are gonna rule over active and passive voices. These are quite easy. Just through the structure, you are just into it. So the next is interrogative sentences. As we all know that in interrogative sentences our form of verbs comes at the start, after that subject, after that first form of verb plus object. Now here object and subject are replaced, first form of verb is changed into third form of verb and be comes here. अब सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बस उनकी पोजीशंस चेंज करनी है. बी आपको सब में नज़र आ रहा है, बाय आपको सब में नज़र आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको सब में नज़र आ रही है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई हुई आपको सब में नज़र आ रही है. विल एंड शैल आर द ओनली हेल्पिंग वर्ब्स, उनकी पोजीशन आपको बस चेंज हुई हुई नज़र आएगी, बाकी है वही कुछ, और नेगेटिव में नॉट की एडिशन है. तो इधर मैं आपको एक सेंटेंस की एग्जांपल देती हूँ. Will you finish your work? Will your work be finished by you? Simple. Shall I read a book? Will a book be read by me? So this is all. जो मेन चीज़ है वो यही है, इसको प्रैक्टिस करें और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बस आप जो टर्म्स हैं उसको प्लेस करते जाएं. नेक्स्ट कम्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इधर आपकी बुक पे इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ. इधर आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शैल
प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं रिपीट कर देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल एंड शेल दैट आर हेल्पिंग वर्ब्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव with the addition of been to support it plus third form of verb plus by plus subject. So it is quite simple. uh, I shall have drunk milk. Milk will have been drunk by me. Milk, अब will जो है वो यूज़ हो रहा है as helping verb और have as it is उसको support करने के लिए been, will have been drunk third form of verb as it is by और जो I है वो me में convert हो गया है। इसी तरह इसकी एक्सरसाइज में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यू विल हैव टेकन अ बाथ। तो ये आपका पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसकी एग्जाम्पल है और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो ये बहुत जो मैंने आपको बताया है अभी स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है यू विल हैव टेकन अ बाथ। अब जो अ बाथ है वो आपका ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा अ बाथ विल हैव बीन टेकन बाय यू। अब आप नेक्स्ट देख लें, दे विल हैव फ्लोन काइट्स, काइट्स विल हैव बीन फ्लोन बाय देम। तो ये बहुत सिंपल है। इसके बाद हम एक दफ़ा नेगेटिव को देख लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी मेंशन है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद नॉट का एडिशन हो रहा है और जो हैव है वो परफेक्ट को सपोर्ट करने के लिए लगा है ना, विल नॉट हैव शेल नॉट हैव। तो ये इस तरह लगेगा। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये इंटरचेंज हो गए हैं, बीन का एडिशन है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हेयर आई शेल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, मिल्क विल नॉट हैव बीन ड्रंक बाय मी। इसको एक्सरसाइज में से भी देख लेते हैं। He will not have recited the Holy Quran. The Holy Quran will not have been recited by him. She will not have told a lie. A lie will not have been told by her. तो ये सिंपल है, बस स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। इंट्रोगेटिव देख लें, इसमें विल एंड शेल जो है आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। इंट्रोगेटिव में हमेशा वो स्टार्ट पे आ जाता है विद एडिशन ऑफ क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें क्या है, विल एंड शेल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन रिप्लेस हो गई है और फॉर्म ऑफ वर्ब को सपोर्ट करने के लिए बीन इंडल्ज हुआ है, हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसकी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव की विल दे हैव सॉल्व्ड सम्स। अब विल जो है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, दे आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका परफेक्ट टेंस को सपोर्ट करने के लिए लगा है, सॉल्व थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो सम्स है ये पहले आ जाएगा, विल सम्स हैव बीन सॉल्व्ड बाय देम। इसी तरह विल सलमा हैव नाइटेड अ स्कार्फ, will a scarf have been knitted by Salma? तो ये सिंपल है। Will he have won the first prize? Will the first prize have been won by him? तो स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो एक दफ़ा स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा तो आपके लिए इनको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। टेंस को जहन में रखें, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को जहन में रखें, उसके हेल्पिंग वर्ब को जहन में रखें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के जो रूल्स हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए। उसके बाद आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। Stay blessed, stay happy, stay at your home, take care of yourselves as well as your family. Allah Hafiz.